Hello and welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button and press the bell icon if you think that these videos are beneficial for you. In this video we will discuss about the final accounts paper 2009 for BCOM 1, but it is also beneficial for the students of intermediate, especially intermediate in commerce. So let's start the question. Question is that from the following trial balance of Farhan and company, you are required to prepare trading and profit and loss account or income statement for the year ending 31st March 2009 and a balance sheet as that date. इस क्वेश्चन के अंदर वंस अगेन, बल्कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको फेवरेबल बैलेंसेस के बारे में मालूम होना चाहिए. You will have to know and understand about the favorable balances. So one by one इसको solution भी given है, लेकिन one by one इधर से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये चीज़ किधर जाएगी. Opening stock is your asset. It will be placed on the debit side of trading account. Land and building is your asset. If depreciation is given in adjustment, then subtract depreciation out of the value 62,500 and remaining balance will be placed on the asset side of the balance sheet under the head of fixed assets. Goodwill is also your asset. So ये भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर प्लेस होगी. प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट. बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर ये प्लेस होगी 68,750. और सेम वही बात जो पहले मैंने की है कि अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें से एक्सक्लूड होगी और रिमेनिंग बैलेंस इसका करंट जो बुक वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट के अंदर अंडर फिक्स्ड एसेट जाएगी. लूज टूल्स ये भी आपके लिए एसेट है. इसके बाद ड्राइंग्स एंड कैपिटल. यहाँ पे आपको आके फेवरेबल बैलेंसेस की अहमियत का और अंदाजा होगा कि यहाँ पे आप देखें कि ड्राइंग्स एंड कैपिटल इकट्ठे उसने दे दिए हैं, तो आपको जिसको फेवरेबल बैलेंसेस के ऊपर ग्रिप है वो ये समझ सकेगा कि इसमें से ड्राइंग कौन सी और कैपिटल कौन सा है. ड्राइंग कैपिटल का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और ड्राइंग्स जो हैं, ड्राइंग्स कैपिटल के बीच में से डिडक्ट की जाने वाली अमाउंट है जो कि प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर वो अपने ज़ाती यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बीच में से डिडक्ट करता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है, तो उसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा. बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. अब bills receivable is your asset and a favorable balance of asset is debit. So 6250 is bill receivable and bills payable is your liability. So 20,000 is your bills payable and it will be placed on the liability side of the balance sheet, and this 6250 will be placed on the asset side of the balance sheet. Purchases and sales. Once again, what is the favorable balance of sales? Sales is your revenue, so its favorable balance is credit. So 312500 will be placed on the credit side of the trading account, and 112500 will be placed on the debit side of your trading account. Carriage, if carriage के साथ इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लिखा हुआ तो ये ट्रेडिंग के अंदर ही आएगा 1250, और अगर इसके साथ इनवर्ड हो तो फिर ये ट्रेडिंग के अंदर आता है, और अगर आउटवर्ड हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेबिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. सैलरीज इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेजेस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस जस्ट लाइक कैरेज, so wages will be placed on the debit side of the trading account. Loan to SN and company at 10% per annum. आप लोन दे रहे हैं
किसको, एसन एंड कंपनी को. यू आर गिविंग द लोन टू एसन एंड कंपनी, सो इट इज योर इन्वेस्टमेंट. सो 3750 will be placed on the asset side of the balance sheet, and this 10% per annum is your interest, it is your revenue. So 10% of 3750, obviously it is 375. So 375 is your accrued revenue. So it will be placed on the credit side of the profit and loss account, and it will also be added to loan to Ascent and Company in investment under the head of current assets. Sundry debtors and creditors. Sundry debtors are your assets and sundry creditors are your liabilities. Sundry creditors वो लोग हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, वसूल करने हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपको पैसे देने हैं. तो सन्ड्री डेटर्स इज योर एसेट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट इज 50,000, so these are sundry debtors, and sundry creditors are your liability, so 75,000 will be placed on the liability side of the balance sheet. Cash at bank, cash in hand, furniture, all these are assets for you, so these will be placed on the asset side of the balance sheet. Cash at bank and cash in hand both are your current asset, and furniture is your fixed asset. After that, returns. Favorable balance of purchase is debit, and if purchase return, then favorable balance of purchase return will be credit. So this 3750 will be excluded from purchases 112500, and favorable balance of sales is credit, and sales returns favorable balance will be debit. So 3125 will be excluded out of sales, 312500, and remaining balances will be placed in the trading account. After that, bad debts 1875. इसका एक फार्मूला है जो कि मैंने पहले भी दोनों वीडियोस के अंदर आपसे डिस्कस किया है, ये अभी इसके अंदर फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रीटमेंट है उसका फॉर्मूला है बैड डेट्स एट राइट ऑफ एट न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन. ओल्ड प्रोविजन इज नॉट गिवन हियर, सो वी विल सी that if any adjustment related to bad debts is given or not. Prepaid insurance 4375. Prepaid insurance is your asset. Prepaid insurance वो इंश्योरेंस है कि जिसका आपने पैसे पहले से पे किए हुए हैं लेकिन उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ. तो इट मीन्स कि 4375 की जो अमाउंट है इसके पैसे अभी तक ये आपके लिए एसेट है, ये इंश्योरेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई बल्कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये एसेट है आपके लिए. अब आते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे. तो क्लोजिंग स्टॉक जी, सबसे पहले स्टॉक ऑन 31/3/2009 वाज वैल्यूड एट ₹50,000. क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे ट्रीट होता है, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स के साथ, और एक ये बैलेंस शीट में एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर ये ट्रीट किया जाता है. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड बिल्डिंग 5%. अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू 68750, इसका 10% 6875 होगा. वो आपने कैलकुलेट करके एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर लिखना है, और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट में से ये डेप्रिसिएशन का ये 10% माइनस करके रिमेनिंग वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट के अंदर लिखनी है. और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग भी इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे कही जा रही है जी कि 5% है. तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग 62,500, और ये जो भी इसका 5% बनेगा ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आपने प्लेस की, बिल्कुल उसी तरह बिल्डिंग की भी 5% डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करनी है.
और फिक्स्ड एसेट के अंदर जिस वक्त आपने बिल्डिंग की वैल्यू लिखनी है जो 62500 है, इसमें से ये डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखना है. सब्ट्रैक्ट दिस डेप्रिसिएशन 5% आउट ऑफ 62500 एंड रिमेनिंग वैल्यू विल बी प्लेस्ड in the asset side of the balance sheet under the head of fixed assets. Outstanding wages rupees 2500. Outstanding wages जो हैं ये वो wages हैं जो कि आपके ऊपर ड्यू हैं, आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं और आपने ये पे करनी है. You will have to pay this 2500. It is liability for you. तो एक तो ये है कि ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के ऊपर जाएगी 2500 करंट लाइबिलिटीज के अंदर, और दूसरा ये है कि ये ट्रेडिंग में जिस वक्त आप वेजेस लिखेंगे तो उसके अंदर ये आप ऐड कर देंगे. यू विल हैव टू ऐड 2500 into 31250 under in the trading account debit side. After that, interest on asset and company loan was due for 1 year. We already discussed this, that this is revenue for you, and आप दो जगह पे इसको प्लेस करेंगे कि एक तो ये है कि एक क्रेडिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको लिखेंगे. इंटरेस्ट कितना है, 10% है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, 10% पर एनम. सो 375 विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज रेवेन्यू फॉर यू. और दूसरे नंबर पर ये है जी कि ये एसेट साइड के ऊपर भी इस इन्वेस्टमेंट में एड अप हो जाएगा, 3750 प्लस 375. उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड. अब ये आ गई बात इंश्योरेंस से रिलेटेड. यहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये वो इंश्योरेंस है जिसका आपका टाइम अभी नहीं पूरा हुआ. तो ये जिस वक्त तक टाइम नहीं पूरा होता इसका, उस वक्त तक ये आपके लिए एसेट है. तो इसका अब क्या मतलब है, ये जो ये बात कही है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ₹1875, इसका मतलब ये है कि 1875 की जो इंश्योरेंस है ये एसेट से एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी है. 1875 insurance amounted to 1875 now is converted into expense. So एक तो ये है कि ये 1875 हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर एक्सपेंस में शो करेंगे, और जिस वक्त बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ये प्रीपेड इंश्योरेंस जिस वक्त हम प्लेस करेंगे तो 4375 में से ये 1875 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हेन वी प्लेस दिस प्रीपेड इंश्योरेंस इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट वी जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस 1875 आउट ऑफ 4375 एंड रिमेनिंग इज योर एसेट, करंट एसेट. Provide 5% on debtors for bad debts and after that 2% for discount. So सबसे पहले हम फार्मूला, मैंने बैड डेट्स का क्या बताया था आपको, बैड डेट्स add write off is not given here, so write off is 0. Bad debts is 1875. After that bad debts, add write off, add new provision 5% on debtors. This is your new provision, and 5% on sundry debtors. Sundry debtors are 50,000, so 2500 is your new provision, 5% of 50,000, and this will be given here. Bad debts 1875, add new provision, that is 0. Sorry, write off is not given in the question, so we just leave. New provision 50,000 of 0.05, 2500 less old provision. Old provision is not given. Old provision और bad debts ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होते हैं, जैसा कि bad debts वहां पे गिवन है यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहीं पे होता तो उसका मतलब था ये ओल्ड प्रोविजन है. ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 4375. और उसके बाद कहा गया है कि एंड आफ्टर दैट 2% फॉर डिस्काउंट. नाउ इट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी subtract 2500, this new provision, out of sundry debtors. Sundry debtors are 50,000, so sundry debtors 50,000 minus 2500
and take 2% of the remaining amount. 50,000 minus 2500 is 47500, multiply by 0.02, and that is your provision for discount. So now trading account, opening stock debit, closing stock credit, purchases less return debit, sales less returns credit, wages add outstanding debit, and carriage debit, and that is your gross profit. Now this gross profit will be transferred to the credit side of the profit and loss account, and salaries, insurance expired, which we already discussed, 1875, depreciation on plant and machinery, depreciation on building, bad debts formula is already discussed, provision for discount is already discussed. So these are all indirect expenditures for you. And interest on loan to ascendant company, this is your revenue. So now your profit is 88800. Now we come to the third part of the question, and that is balance sheet. So assets are cash at bank, cash in hand, closing stock, building less depreciation, plant and machinery less depreciation, furniture 2500. After this there is no depreciation for furniture, so directly the amount will be placed here. And prepaid insurance, now 4375 minus 1875, which is expired now, and remaining is 2500. Sundry debtors, here the formula for sundry debtors is in the balance sheet कि सन्डी डेटर्स में से आपने अगर राइट ऑफ गिवन है तो वो भी माइनस करना है, अगर न्यू प्रोविजन है तो वो भी माइनस करनी है, और अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है तो वो भी माइनस करना है. अब इस क्वेश्चन में देयर इज नो राइट ऑफ, न्यू प्रोविजन इज asked in the question, provision for discount is asked in the question, so these both will be subtracted out of sundry debtors and remaining balance will be given here. Or bill receivable, loose tools, goodwill, loan to ascendant company, interest on loan outstanding, these are all your assets. And total asset side is 311300. And now we come to the liability side. So capital given here, net profit which we calculated here 88800, and less drawings. ड्राइंग्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पर्सनल जो प्रोप्राइटर या ऑनर अपने यूज़ के लिए जो बीच में से डिडक्ट करते हैं, ये वो अमाउंट है, तो ये माइनस करके बाकी आपके पास ये अमाउंट आ गई. वेजेस आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी, sundry creditors is your liability, bills payable is your liability. Now liability side and asset side is balance 311300. So thank you very much. Practice करें इन questions की. Soon I will come with another question of final accounts of next paper. So stay safe, stay blessed, take care of yourself and the persons around you. Thank you.